See, there is no separate notes I made for prelims as such. जो notes, the A4 sheets that I made was for each syllabus point in the main syllabus. ठीक है? 1 or 2 A4 sheets max for each syllabus point. ठीक है? उसमें I'll tell you what was there in those sheets. Basically, it was a definition. ठीक है? 5 important points. कि why is it important? 5 challenges that we face in that. Basically, what type of questions do you get in mains? What are the challenges? What is the way forward? On those lines, think in terms of answer structuring. Those notes were made in form of question and answers. That will help you. Prelims के लिए the notes, there were no notes because the sources for prelims, for example, your Lakshmikant, Spectrum, EMF, Geography, whatever handouts, you don't have to make notes for them. Just study them again and again. This is primarily for mains because the subject and the syllabus points are quite diverse. You won't find agriculture as it is in some book, and even if you find it, it will fall short of the content. So you have to go in depth thoda, you have to analyze the PYQs, what kind of questions they ask you in that sense. Okay. What was the second question? So in terms of the answer writing that you did. Okay. So the answer writing from topper copies was not an exercise for content generation. It was an exercise to improve the answer structuring, the presentation, the points, and how I deliver content. It was not for content. But if I used to find some kind of committees, some judgments that he has written, she has written, I would definitely include it in my notes, but not an exercise for content generation, basically. Thank you, sir. Just two things more, sir. Firstly, just to clarify, so for instance, if there's agriculture there in a syllabus pointer, for agriculture itself, you'll have 2 or 3 pages. Right. And that's it. Yeah. And then more or less. In fact, when you look at the syllabus, no, within agriculture also they have provided cropping pattern, irrigation, exactly. No, MSP, PDS. That is all of one A4 sheet. Each and every cropping pattern pe one sheet should be there. That's what I'm saying. Every point of the syllabus pe one sheet should be there. I'll again repeat one thing that Archit has suggested. You know, मैं कई बार देखता हूँ बच्चे बहुत सारा समय बर्बाद कर रहे हैं, वो लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाने लग जाएंगे प्री के लिए. प्री के लिए ना, स्टडी फ्रॉम द सोर्स, रिवाइज इट, अंडरलाइन इट, हाईलाइट इट, मार्क इट एंड गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन. क्योंकि प्री में आरओआई ना थोड़ा सा कम. देखो मेंस में बिकॉज सिलेबस इज सो वेल डिफाइंड, इट इज इजी टू प्रिपेयर फॉर ईच एंड एवरीथिंग. प्री में सिलेबस इज नॉट डिफाइंड. साइंस में जनरल साइंस लिख के छोड़ दिया है. अब आप साइंस के सारे मटेरियल लेके सबके नोट्स बनाने लगोगे, इट विल बी अ ओवरकिल, है ना. पॉलिटी में ये नहीं बोला कि मेंस में आप देखो पॉलिटी का सिलेबस क्लियरली डिफाइन है, तो आप सब पे मेंस के लिए स्पेसिफिक नोट्स बना सकते हो. बट प्रीलिम्स में डिफाइन नहीं है ना, तो आप अब लक्ष्मीकांत को निकाल के उस पे नोट्स बना रहे हो, वो बहुत सारा टाइम लग जाता है बच्चों का. और कई बार यू स्पेंड मोर टाइम इन मेकिंग दोस नोट्स रादर देन रिवाइजिंग दोस नोट्स. स्पेक्ट्रम वो ऑलरेडी नोट्स ही बनाया है यार, है ना. वहीं पे अंडरलाइन करो, वहीं पे मार्क करो जितना हो सकता है. एंड दिस इज व्हाट यू हैड सजेस्टेड रादर देन रनिंग बिहाइंड. कि अब जैसे अब मैं क्लासेस में पढ़ाता हूं तो साइंस एनवायरनमेंट पढ़ा रहा हूं, बच्चे बोलते हैं सर इसके भी नोट्स बनाए क्या, या प्रीलिम्स वाले चीजों के नोट्स नहीं बनाने, वो नोट्स ही हैं. अंडरलाइन करो, मार्क करो, स्टडी करो, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, एंड दैट्स इट. मेंस में यू शुड हैव नोट्स इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट. एज ही सेड, फॉर एवरी टॉपिक यू शुड बी लाइक, मैं इंट्रो कैसे लिखूंगा, इसके 5 की इश पॉइंट्स क्या है, challenges 5 क्या है, वो 5 keywords should be there in your notes so that you'll be able to expand them. Or sometimes conclusion also. Yeah, conclusion also. For example, I tell you like RTI is one of the topics, right? मेरा इस पे हमेशा conclusion fix रहता है. थॉमस जेफरसन का quote है, information is the currency of democracy. I always write that and it has become in my muscle memory. So these kind of things you should be able to write as soon as you see the question. So be that prepared is what I'm saying.